Welcome back. Yeah, Minu, you want to share something? हाँ सर, मैं बोल रही थी कि वो जो हम लोग एंगर की बात कर रहे थे ना, कि जब एंगर आता है, एम आई ऑडिबल? Yes, yes, yes. हाँ, जब एंगर व्हेन व्हेन मतलब हम लोग उसको एक मतलब ये डिस्कस हो रहा था उस टाइम कि एंगर जब हमको ये पता चल जाता है कि एंगर का जो सोर्स है, जो कारण है, वो है हमारी खुद की खुद का इमेजिनेशन या अजम्पशन, कुछ भी हम जो कर रहे हैं दिमाग में, उसके वजह से एंगर आ रहा है। एंगर का जब हम डिस्कशन कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि जब हम ये समझ जाते हैं तब एंगर आएगा ही नहीं। अब इसमें नहीं, एक बात ऐसा नहीं कहा जा रहा था। मतलब वो कल्पना ना टिकने का ही चांस है अगर दिख जाए तो। हाँ, उसमें एक चांस और ये भी हो सकता है कि कल्पना टिकने का चांस जो नहीं है वो हम बोल रहे हैं। और साथ साथ में अगर ऐसा हम समझ रहे हैं और एंगर अभी आ भी रहा है, हाँ, तो क्या वो अराइज होते हुए भी हमको दिख रहा है? बिकॉज दैट होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगर कम्स फ्रॉम समथिंग that is imagined, is becoming a part of some is it a knowledge or is it ongoing understanding? So अगर वो knowledge बन गया है, जैसे कि हम खाने में भी ऐसा कर लेते हैं कि कुक्ड फूड हमारा खाना नहीं है, तो अब हम कुक्ड फूड नहीं खाएंगे। तो हमें अगर ये समझ आ रहा है, तो हमें ऐसा कोई डिसीजन लेने तो का वो कोई नीड नहीं डिसीजन ले पड़ेगा। लिए, कुक्ड फूड नहीं खाएंगे, पर लालच आ रहा है, उसको दबा के नहीं खा रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो? ऐसा हाँ, सिचुएशन ये एक बोलो। पॉइंट हाँ, है। ठीक है। एक एक पॉइंट तो ये है, ऐसा सिचुएशन। और दूसरा ये है कि डिसीजन लेने का जो आता है मन में, वो कोई नॉलेज के वजह से आता है। अगर ऑन गोइंग इंक्वायरी कंटिन्यू, मतलब हम मोमेंट टू मोमेंट अगर इंक्वायरिंग हो रही है, तो डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि अगर लालच आया भी, वो उस टाइम दिखेगा कि हाँ ये लालच आ रहा है, वो क्वेश्चन भी उसी समय साथ साथ में हो रहा है, और उसका जो भी उस टाइम होना है, चाहे खाए या ना खाए, वो भी हो रहा है। और एंगर के साथ भी सेम, एंगर के साथ भी हाँ, सेम। एंगर आया, आपको दिख रहा है, और उसके साथ जो हो रहा है, होना है, जो हो रहा है। That makes sense. Yes, yes, yes. This is in which context you are sharing? जो वो लालच का एक्चुअली डिस्कशन, कुक्ड फूड का डिस्कशन, वहां से आ रहा था ये? वो एक एंगर का डिस्कशन हो रहा था उस समय। अच्छा, अच्छा। जब ये आया था दिमाग में, कि उस टाइम हम ऐसा सोच रहे थे, मतलब ऐसा कुछ डिस्कस हो रहा था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर व्हाट इट वाज, बट ओके, दिस ओके, पॉइंट यू वाज नॉट सस्पेक्टेड कमिंग एन अक्रॉस। अजम्पशन जे ये यस, एंगर आएगा ही नहीं, तो या so you are bringing on the table that there could be या instances of anger, but if हम्म, it also can be observed then and there, या then something else can happen. Yes, yes, makes sense, makes sense. Thank you, thank you for that. Right, so awakening of inquiry. Awakening of inquiry, actually the characteristics of inquiry is this choicelessness, but choicelessness is not the agenda of inquiry. It's a byproduct. तो कंडीशन माइंड का जो फॉर्मेट हम लोग देख रहे थे, P3 P2 लूप्स वाला कंडीशनिंग,
So those are actually nothing but P3, P2 loops are nothing but choices. And that is what is the conditioned mind. So choices become the conditions of the mind, under which the mind doesn't have its own potential to operate. Because those are the bondages which actually pulls back the mind. Mind cannot operate with its optimum potential when it is conditioned, and the choices are the conditions. Because the mind becomes very much biased, where it will look for what it will look for. These all things are actually biased before. Mind is no more free to look at the facts, what is happening in front of the individual. The individual is always biased and focusing on the choices just to achieve it, or just to avoid it, just to get rid of it, perhaps. Do we see this? Inquiry cannot proceed when we are blind to stimulation and suppression. So choices are for what? Yeah, Nita, you wanted to say something? I just wanted you to repeat that question. I mean, I didn't get that. Right, right. So if we are under some choices are there, Right. means there will be an intention to achieve it or to avoid it. Both way it operates. Like there could be a choice to achieve something, there could be a choice Right. to avoid something. Correct. So this will have a target to achieve. Now, whatever phenomena that is happening in front of the individual will be blind to that particular phenomena that is happening wholly. The complete happening will not be looked at, because the individual is blinded, energy wise captured to achieve or avoid. It is pushing him. The individual is pushed by the choices to look for the choices in that happening, to compare that choice in that happening. So what actually is happening is missed out by the individual. And this is just the limitation of the energy that one operates with, because the energy is primarily captured in the choices, information of the choices and justifying the choices. The moment we frame a choice, it will be justified by the individual. Right. So time and again, we try and justify it, and those are actually separate choices, and it becomes endless loop thereby. Correct. So choices are nothing but the intentions to stimulate and suppress. If we dive down the choices, what for this choice, then we'll find that something we are trying to stimulate as a pleasure and something we are trying to suppress. These two things are operating. Whereas the fact of pleasure and pain is that it's going to end by itself. The pleasure also is going to end and pain will take over, and pain will also end and pleasure will take over. This is the natural movement of pleasure and pain. It's a sine curve. Correct. Please carry on. Yeah. Are there any bodily cues available? Now, this is the question that we have to ask ourselves. Are there any bodily cues available to inquire? And this perhaps a relief or a possibility of that awakening of inquiry. Because the sensation is happening at the body level. And we can definitely go deep into observing the sensation. And a lot of things can be revealed if we go deep into observing the sensation.
So basically the conflicts are sensed at the physiological level. Physiological sensations triggered by the perceptions are the conflicts, P3, P2 loops. Now, if we deny that conflict, then it intensifies. Our experience is such, isn't it? If we deny it, it intensified. Like the craving is an example that we all experience. That whenever we deny, we suppress it as if it gets intensified. Now, conflicts are products of imaginations. This is also a fact that we are able to intellectually understand it. Now, inquiring the route and the root of the sensation reveals the truth of it. See, the primary confusion that happens, the sensation is happening within the body. Now, whether it is happening for real or coming out of the imagination, unless we go deep into it, we will not be able to identify it. We will get confused that this is real, unless we go deep to the root of the sensation. So, Sir, what does inquiring sensation means? Yeah. So by root we mean that वो P1, P2, P3, P1, P2, P3 चल रहा है या फिर P3, P2, P1, P3, P2, P1 चल रहा है, right? Yes, yes. So conflicting दोनों में order से है, कौन सा चल natural रहा order है, natural order है या conflicting order में चल रहा, sequence क्या है? इसका मतलब वो है. So हम ये कह रहे हैं कि अगर sequence P1, P2, P3 है, या actually what was that last sentence in that slide, sir? Inquiring route and the root of sensations reveals the truth of it. हाँ, so root ये जो first है route जिसको हम pronounce कर रहे हैं, that is रास्ता, the P1, path. P2, P3 कौन सा path है? Path और ये क्या है? root of sensation जो हम कह रहे हैं वो क्या है सर? वो P1 है, अगर natural order में है, then P2 का root है P1. P1 से आ रहा है. और अगर conflicting order से है, तो फिर P3 is the root of the P2. Yeah. So how does inquiring sensation? What does inquiring sensation mean? Yeah, so we can take some reflection or questions, because now we are going ahead mixing the concepts of nature cure also and this inquiring framework. So this will be a change of topic, perhaps connecting to the previous topic. But at this point, we can take up some reflection or questions. Open the forum. Any reflection, anyone, or all are eager to go in that? Yeah. Yeah, Nandini. Sir? Yeah, I have a question, which Yeah, is, Nandini, please. ये मेरा previous question ही है, and just wanting to know कि ये handle हो जाएगा as we go forward या नहीं. मेरे दिमाग में अभी भी ये question है कि ये जैसे a lot of teachers teach about creating your own reality, visualizing it, and using that to move forward with the vision and all that. Uska kya role hai? Is it based on truth or is it unnatural to do that? Because yesterday I asked this and we examined this, and you said that physiology can be affected by psychology, and that is true. Yes. But you know, is this a natural way to go for something, whether it is to, you know, create? Yeah, you will be able to answer it. Nandini, you will be able to answer it, because the very definition of natural is the spontaneity. If it is happening under some condition, can we call it as a natural? It cannot be called, right? If it is conditionally happening,
then it is not naturally happening. The very definition actually defies that particular aspect as natural, isn't it? The very definition I'm of getting natural what you're is a saying, but let me spontaneity. give Yeah, you a yeah. example, if you can Yes. help me Yeah, with the please, example. please. So, like for example, during COVID, my blood pressure really shot up, for example, and I really didn't want to go to a doctor and get into all that. So instead of sitting there and worrying about it and finding medical doctors and obsessing about my BP, for example, this is just a hypothetical example, I sat down in meditation, I did deep breathing, I visualized that all was going to be well, I was going to be fine. And I did a lot of deep meditations, you know, 2 ghante subah sham, and a lot of visualization that I'm being healed, it's all well. And then I also practiced slow breathing. And I was okay. I didn't need to go to a doctor. तो ये क्या था? ये एक natural process है, ये valid है as a way of handling, you know, some fear or some panic that may be arising. ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या छोड़ इसको देना चाहिए समझते हैं अपने थोड़ा. आप, you know? Yes, थोड़ा yes, yes. इसमें मुझे confusion है. Very effective point actually this one. So इसको समझते हैं, इसका premise को समझते हैं. पहले मैंने ब्लड प्रेशर को नापा और उसका जो रीडिंग है, उस रीडिंग देखने के बाद मेरे अंदर एक सेंसेशन आया. किस Correct. वजह से आया ना? पहले से मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है जे इसका रीडिंग तो ये होना चाहिए. करेक्ट. कुछ और आया. मेरा एक्चुअल रीडिंग कुछ और आया. ये डिफरेंस जब दिखा मुझे, उस डिफरेंस के वजह से मैं डर गया. एक्चुअली मैंने पहले मुझे फिजिकल सेंसेशन आया कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. यहाँ आते जैसे मेरे कान गर्म हुए, थोड़ा सा चक्कर टाइप आया, तब मैंने मेजर किया उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. तो फिर वहां से स्टार्ट करते हैं. आपका कान गर्म होना स्टार्ट हुआ या गर्दन में थोड़ा दर्द हुआ, ऐसा कुछ मान लेते हैं. आपको नहीं आया बट किसी को आया. कुछ एक फिजिकल इंडिकेशन आया, कुछ हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ. सो डिस्कम्फर्ट होने का सिंपल इंडिकेशन है, उसको काउंटर हम कर सकते हैं फिजिकली. जैसे आपको चक्कर आया, उसका मतलब है आपको तुरंत रेस्ट लेना है, रेस्ट करना है. यही तो फिजिकल इंडिकेशन है. जैसे आपको थकान आया है, आपको रेस्ट करना है. उसी तरह चक्कर आया तो आप बैठ जाओ ना, आप खुद को आराम करो, फिजिकली आराम करो. ये स्टोरी बिल्डिंग जो होता है उसके साथ, जो चक्कर आया, इसका मतलब जो वो डेफिनेशन ऑफ मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम भी कहा जाता है, जो सिम्टम्स को हम वेरीफाई करते हैं, जो पास्ट नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन दिमाग में पड़ा हुआ है. जो चक्कर आया और गर्दन में दर्द है, मतलब ब्लड प्रेशर को नाप लो. फिर ब्लड प्रेशर को नापा तो हम स्टोरी के ऊपर चल रहे हैं. जो भी ज्ञान हमारे अंदर पहले से पड़ा हुआ है उसी पे चल रहे हैं, और जो सच में हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं. जो सच में हो रहा बॉडी में, वो सच में क्या है, मुझे रेस्ट का एक रिक्वायरमेंट दिखा है. इतना सिंपल सा बात था. उसको मैंने स्टोरी बिल्डिंग के द्वारा एक डर में कन्वर्ट कर दिया. ये देख पा रहे हैं क्या? हाँ, देख पा रही हूँ. एट द सेम टाइम वो लेटे लेटे भी चक्कर आ रहा था, तो डिस्कम्फर्ट हो रहा था लेटे लेटे भी, रेस्ट करते हुए. ठीक है. Just a point कि ये मेडिटेशन और calming yourself, ये भी तो एक तरह का रेस्ट ही हुआ. I mean, while लेटना is the rest, the physical rest, but ये psychologically तो एक तरह का रेस्ट ही हुआ, that you're calming yourself by. But impression of that was not so. Impression of that was as a treatment. जो मेंटल इंप्रेशन है ना, उस पे चर्चा हो रही है. तो उसका जो प्रिमाइज है वो है ट्रीटमेंट. हमारे दिमाग में जो चल रहा है वो रेस्ट नहीं है, वो है ट्रीटमेंट.
और ट्रीटमेंट का मतलब है ये जो मिसट्रस्टिंग द बॉडीज इंटेलिजेंस. Okay. Are you able to understand? This is not a blind belief we are talking about. The very premise of the existence is this healing capability and responding optimally under any situation. That is the very characteristic of any existence. तो हमारा बॉडी भी उससे कुछ अलग नहीं है. वो बॉडी ने उस तरह उस टाइम एक जो रेस्पॉन्ड किया, उस रेस्पॉन्ड को मैंने एक्नॉलेज करना ही नहीं है. मैं पुराना जो ज्ञान है उसके वजह से मैं उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया. मुझे भूख नहीं लग रही है तो मैं जुगाड़ कर रहा हूं. मुझे खाना, जैसे अतनु शेयर कर रहे थे जो उनका बच्ची को भूख नहीं लगता है, तो डेफिनेटली फैमिली, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस देयर इन देयर फैमिली, बट नॉर्मली जो कन्वेंशनली होता है कुछ और तरीके से खिलाओ इसको, कुछ गुमराह करके खिलाओ. अभी कोई एक लेडी भी शेयर कर रही थी ना, जो कौवा दिखा के खिलाया जाता था, ये सारे होते रहता है. तो एक्चुअली उसको भूख नहीं लग रहा है, वो है मेन मुद्दा. उसको खुद को भूख का सेंस नहीं हो रहा. शी इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई हर नेचुरल इंस्टिंक्ट, द बेसिक इंस्टिंक्ट. वो उसका पहला जरूरत है. खाना पहला जरूरत है नहीं, खाना तो उसके बाद आता है. पहला उसका जरूरत है एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए आजकल एक चलन उठा है टॉयलेट ट्रेनिंग. फिर बच्चे खाते हैं, टीवी ना चलाओ तो बच्चे नहीं खाते हैं इन जनरल. फिर लोरी ना सुनाओ तो वो सोते नहीं है. और फिर पॉटी का एक सीट आता है, वही टॉयलेट ट्रेनिंग है. पॉटी के सीट में ही पॉटी करना है उसको, मतलब करवाना है, पेरेंट्स द्वारा करवाना है उसको. वो पर्टिकुलर सीट ना मिले तो पॉटी नहीं होगा. तो यानी कि जो ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो 3 प्राइमरी बेसिक इंस्टिंक्ट है, भूख, सोना और पॉटी करना, पुप आउट करना, ये सारे हम कंडीशन से ही शुरुआत कर देते हैं. तो उसका तो स्टार्ट ही, जिंदगी का स्टार्ट ही हो रहा कंडीशनिंग से. जो वो कहानी ना सुने सो नहीं सकता है, लोरी ना सुने सो नहीं सकता है, टीवी ना देखे खा नहीं सकता है, पॉटी के सीट के बिना पॉटी नहीं कर सकता. तो एक्चुअल चीजें तो हम देख ही नहीं रहे. एक्चुअल चीज को तो देखने का आदत ही नहीं बना रहे, आदत बन ही नहीं रहा. ये हम देख पा रहे हैं कि नहीं? क्यों, बहुत सारे हैं. ये एक आध जो निकल रहा है एग्जाम्पल के तौर पर. हाँ, श्रेया आप कुछ बताने वाली थी. हाँ, मतलब जो मुझे कल वो अफर्मेशन से पूछ रही थी, अभी क्लियर हुआ जो आप बोले कि अंडर कंडीशन ही तो कुछ अचीव करेंगे ना. साइकोलॉजिकल रेस्ट है ये. हाँ, ये साइकोलॉजिकल रेस्ट है जो अपन जैसे ये योग निद्रा या विजुअलाइजेशन से जो दे रहे हैं. ऐसे अपनी कंडीशनिंग ये है कि भाई मैं किसी काम की नहीं हूँ, लेकिन हम उसमें अगर जैसे से, तो एक तरह से अपन बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस कर रहे हैं और ये कॉम्पेंसेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ, बट इट्स नॉट द नेचुरल वे. मतलब इट्स स्पॉन्टेनिटी मिसिंग है इसमें. एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी मिसिंग है बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट फीलिंग बेटर वे. हाँ हाँ. तो आप क्या कह रहे हैं कि इनहेरेंटली ये सही नहीं है, या जिस रीजन से ये किया जाए, लाइक इफ आई हैड टेकन इट एज अ रेस्ट then it's okay, but if I'm taking it as a treatment and I'm not trusting my body, then it's probably not okay. Is that what you're saying? Again, okay not okay का discussion नहीं हो रहा यहाँ पर. Whether there is natural, an assumption, yes, whether it is happening spontaneously or it is happening under condition, we are trying to understand that. If it is happening under condition, then it is an extra load on the energy. When you say under condition, you mean special with some arrangement. goal in view, or to run away from something, right? Run away from some sensation. No, some special initiative. Now, some special initiative is bringing this change.
That And when you spatial, say it happens, sorry. that spatial initiative is that condition. And when you say it should happen, I mean, when it happens spontaneously, it's natural. How can you explain how it That's the would be definition of the natural? natural, right? How do you define natural? How do you define natural? It's a Which is spontaneous, not right? depleting the energy, which is what you are. I'm just trying to understand what Spontaneous. spontaneously means. Spontaneous means without any intervention, without any intention, as a natural tendency it is happening. As a habit? Naturally it is happening. It is not coming out of an intention. Intention is a customized thing. Hmm. Okay. Intention is a customized thing, which could be termed as condition, choices, opinions, whatsoever. Now, if something is, suppose there's no value of opinion, right? In a natural discussion, in a healthy discussion, so-called, there is no value of opinion. If somebody is very fixated about the opinion that my viewpoint is this, and this must be proven or this must be established, this is very artificial discussion in that sense, right? So unless we are exploring truth and deleting the opinions, it is not very natural. Can you understand this? Sir, what do Yeah. you mean by this? Vapas Little- please. Is A there little any more network clarity issue? on this. Is there any network issue from my side? Am I No, audible? sir. No. There Okay, is no okay. net. sir, you There's are a- audible. Okay. You're audible. The lag I found at my end. Anyway, yes, Pooja, you wanted to say something? Yes, please. Sir, I want clarity on the last statement. Last statement of the opinion versus the truth, Truth, yes. right? So what is an opinion? Opinion is an interpretation of the truth, of a portion of the truth. That's what is the opinion. Because opinion comes from an individual, and that individual has got a specific spectrum to see the truth. Can you understand this? We have started with that spectrum of experience, all those aspects we discussed. Spectrum is a Yes, small window that is available to us. So opinion is some interpretation out of that window. When we see the truth from that window, and that also a portion of truth, and we interpret something, this is an opinion. An opinion practically is of no value, because it is just coming out of a small window. Can we understand this? In terms of the truth, Pooja, are you Yes, able to sir. comprehend Yes, this? sir. Yeah. Are you able to comprehend the Yes, sir. meaning of opinion? So if Yes. we see the truth and the opinion, then opinion becomes very minuscule, right, and ignorable. If we are influenced by an opinion, then the perception of the truth is compromised. Can you see the difference? The truth has its own natural movement. Now, opinion brings a condition and interprets that movement in its own interpretation. Now, how can we consider an opinion as a natural movement? This is a So, question. sir, it means that what Shreya has said, the affirmation, in affirmation also we are ignoring the truth and applied our opinion. So that is also unnatural. आप बताओ, मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? Sir, I understand that affirmation when we give, so we are hiding, we are moving away from the truth and giving our own opinion. So it's unnatural thing. So what is not in the present moment and we are giving ki it should happen. So we are doing the unnatural thing. दिख तो वही रहा है, मुझे तो वही समझ में आ रहा फिलहाल के लिए, पर तो सर, जो अननेचुरल बोलते हैं मतलब अभी गलत आजकल- ऐसा नहीं कहा जा रहा है. नहीं सर- अननेचुरल मतलब इट्स नॉट ऑन हाँ द जी. प्रेजेंट भी. तो सर मतलब आजकल जो बोलते हैं कि गिव अफर्मेशंस
give your thoughts. So it means it's not correlated with truth. है क्या? आप खुद ही तो इसका जवाब ऑलरेडी दे चुके हो, हाँ सर, वही नहीं है। नहीं है ना? इस पे फिर हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं जो affirmations, visualization, these are not the truth. These are the conditions that we apply and try and achieve something specific, which is another imagination, whether irrespective of achievement or not achievement, that's an imagination that we all run behind. Yes, ज्योति जी अब कुछ बोल रहा है, और नंदिनी also unmuted, अंजू जी also, yeah. मैं इसी पे कुछ बस एक छोटी सी रिफ्लेक्शन है कि चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव थिंकिंग हो, both of these are not the truth, because the truth is revealing itself Beautiful. in every moment. Beautiful. And we are missing the truth revealing itself because we are either caught in some negative cycle or in some positive intention cycle. There is nothing called positive actually. Positive is a masked negative. The drama of positive thinking that we do is actually masked negative thinking. I understand that. Yes, Jyoti ji. सर मुझे एक्चुअली इसमें मतलब जो आप बोल रहे हैं इसके ऊपर ही बोलना था। अभी फ्रूट डाइट पर हूँ 5.5 मंथ से ज्यादा हुआ है, मतलब ये वीक के एंड में मुझे 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने कुक फूड या वो सब मैंने खाया ही नहीं, मुझे नहीं खाना, मतलब वो बहुत अच्छे से मुझे क्लियर है। लेकिन हुआ क्या, वजन बहुत ही कम हुआ है और अभी वीकनेस है, देन कुछ कुछ सिम्टम्स है, बैकेज है, देन ईयर ब्लॉक्स है, कभी हेडेक है, देन स्पेक्स भी नहीं डाल रही, तो उसके कारण जो हेडेक वो ज्यादा होता है या कंप्यूटर पर काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि अभी सर ने मुझे बोला कि टोमेटो एंड ककड़ी स्टार्ट कर लो, तो मैंने लास्ट वीक में टोमेटो एंड ककड़ी स्टार्ट किया, एक खाया, पहले एक दिन एक खाया, एक ऐसे खाया, लेकिन पता नहीं मतलब टोमेटो एंड पालक का प्यूरी करके पी लो ऐसे बोला। मैंने एक बार उससे थोड़ा सा पिया, लेकिन पता नहीं फिर से वो पीने का मन नहीं किया या मैंने पिया नहीं उसके बाद। देन उसके बाद मैंने ग्रीन वटाना वो थोड़ा सा खाया, वो भी 3-4 बार खाया, लेकिन ये 4-5 दिन चला, लेकिन पता नहीं अभी मुझे खाने का वो सब मन ही नहीं कर रहा, मतलब मैंने 4 दिन से ये सब नहीं लिया, मुझे लेना नहीं है। तो ये जो वजन के लिए या तो वीकनेस के लिए, मतलब सर ने, गौरव सर ने सजेस्ट किया था, लेकिन फिर भी अभी मुझे लेना नहीं है, या मैं नहीं लेती 4 दिन से, मतलब ये सब चीजें हैं, क्या यही है? क्या है मतलब फिर पॉइंट क्या है, प्रपोजल क्या है, क्या मैं अभी भी आप जो अभी समझा रहे तो उसमें से यही निकल कर आ रहा है ना कि नेचुरली ये समझ आ रहा है कि नहीं ये मुझे खाना नहीं। हाँ, मैं खाने को अगर ट्रीटमेंट के तरह देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैं सच से छिप ही रहा हूँ ना। खाना तो मुझे भूख के नजर से हमें खाना देखना है, तो अगर अदरवाइज हम देख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम खुद को धोखा दे रहे हैं, झूठ से खुद को छिपा के रख रहे हैं। इसीलिए तो मतलब ये अभी खाने का मन नहीं कर रहा है तो मुझे अभी नहीं खाना, मतलब ये अभी दिमाग में बैठा है कि ये सब चीजें मुझे नहीं खानी, फ्रूट्स ही खाने हैं मुझे और उस पर ही कंटिन्यू रहना। नहीं, ये डिसीजन क्यों फ्रूट्स की खाना है, ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं आप? नेचुरली मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि इससे जो एसिडिटी या जो सिम्टम्स आ रहे हैं मुझे, हाँ, यानी कि आप लग रहा है ये देखिए मैम, आप ना ये फ्यूचर जो इफेक्ट है उसका वो आपके दिमाग में है, जो एक्चुअल जो खाने का एक्सपीरियंस है ये आपने किया ही नहीं, कर ही नहीं रहे। आपका कोई मकसद है खाने का, और खाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भूख और स्वाद है, और कोई मकसद नहीं है नेचुरली। इसको समझ सकते हैं क्या? आप खाना खा रहे हो बट खाना खाने का कारण ढूंढ रहे हो, आपका हेल्थ या कुछ और। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या? आपका नरेशन से वो निकल के आ रहा है, जो खाना खाने का आप कुछ और रीजन दिखा रहे हो, जो एक्चुअल रीजन है वो आपको दिख नहीं रहा है, भूख और स्वाद।
हाँ हाँ भूख और स्वाद आर द नेचुरल रीजंस फॉर ईटिंग, दैट्स इट। और कहां से क्या हेल्थ का स्टोरी, ये सब तो बाहरी ज्ञान है। आप उसको उसके पीछे दौड़ रहे हो, उसीलिए खाना को मॉडिफाई कर रहे हो। जो सच्चाई है इसके पीछे की वो नहीं दिख रहा है, ये देख पा रहे हैं। हम्म। तो इसको देखने के नहीं, ये बाद समझ अगर में क्या आ रहा होता है। है वो देखते हैं। हाँ जी।